this is Shivani. Welcome to Mums and Millennial. So, we'll talk about the Kala Tika. If you belong to an Indian household, you must be having the memories of Kala Tika when your dadi, nani or mother, you must be remembering जो एक बड़ा सा काला टीका लगा देते थे हमारे सर के ऊपर, स्पेशली टू द बेबीज. एंड इनफैक्ट अगर बेबी रो रहा है और इफ बेबी इज नॉट ईटिंग प्रॉपरली, इफ इट इज वेरी फ्यूजी और एनीथिंग हैपन टू बेबी, ऑल दीज रीजन्स डायग्नोज्ड एज नज़र, उसको ज़रूर नज़र लग गई होगी. दैट्स द वाई ही इज़ नॉट ईटिंग प्रॉपरली, उसकी नज़र उतार दें, राइट. और वी हैव सीन देर आर सम पीपल जो कभी कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं और दे आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू. तो इनिशियली वो लोगों को नहीं बताते हैं व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद द बिलीव कि अगर हम लोगों को बताएंगे तो नज़र लग जाएगी एंड आवर ग्रोथ विल हैम्पर फ्रॉम बिकॉज ऑफ दिस, राइट. So what is this nazar, kala tika, drishti, evil eye? Is it a superstition or is there any logic behind it? So we'll, and you may have also observed that if somebody is staying away from you, that is okay. But जैसे ही वो आपके पास आना शुरू करता है, at a point if a person comes so close to you, your body feels little uncomfortable. Your body wants to say कि please stay away from it. Even though that person is not touching you, still your body wants some distance from that person. What is that feeling? Our body doesn't end here. It extends 3 to 5 inches more for the normal human being. This is called energy. This is called energy, and this energy in the science is defined as the electromagnetic field. We as a human being has electromagnetic field around us, to which we also call human aura. And this aura, this electromagnetic field is very weak for the babies. तो आपने देखा होगा जब भी व्हेन यू गो आउट विद योर बेबी एनीवेयर, तो किसी ऑब्जेक्ट को देख के या फिर किसी पर्सन को देख के योर बेबी फील्स वेरी अनकंफर्टेबल और ही स्टार्ट क्राइंग्स और समथिंग, ही डजंट वांट टू गो टू दैट person or that object. While on the other hand he may be happy, अगर वो कुछ चीज़ देखता है या किसी person को देखता है, he is very comfortable to that person or to that objects, want to grab that object. So why all this happens? This happens because of the aura of that object or that person. It has been proved in the science that most of the energies are releasing through eyes. It is also called the drainage of the energy. So that eye is a very important organ of the human body. Research says most of the energy flows in and flows out through eyes. You have seen people falls in love through eyes. क्यों? When they make the eye contact, so they make some connections between the two people. So the scientific reason to put this काला टीका on your baby face is कि जब कोई इविल आई आपके बेबी के फेस पे पड़े तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वो उस काले टीके पे पड़े विच एक्ट एज द डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट. तो जब आपका बेबी का हम फेस वॉश करें और बेबी इवन टेक द बाथ, तो ऑल दीज नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो वॉश अवे. So now the time has changed. Kala tika fashion में नहीं है. People have started using the black eye in their homes or the black eye bracelet or the black thread. But if you are not washing that black thread or if you are not cleaning that black eye object at your home, then the purpose of protecting yourself from the people's negativity or from the negative energy will fail. So if you have to wash these things properly or you have to clean it properly. वी हैव सीन इन आर इंडियन हाउस होल्ड कि किसी की नज़र उतारने के लिए हमारे जो एल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, दे ब्लो द फायर एंड रोटेट दैट फायर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द बेबी, राइट. सो व्हाट इज दिस? क्या ऐसे करने से नज़र उतर जाती है? इज इट ट्रू और फॉल्स? Welcome someone or when you do puja, you rotate the fire in the clockwise direction because you want to remove the negative energy around that. See, our body is made up of 5 elements. You have seen the people taking the mud bath, air bath, water bath. Similarly, it's like the fire bath. So
अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और बहुत सारी पॉल्यूशंस और द impurities stick on your body, तो what you come and take the bath and you feel like a new life or a very refreshing things. Similarly, like when the people's negativity or their evil eye throw on your body's that aura, on your body's aura, so when we take the fire bath, it helps in removing those negative energy. Hope this video helped you in educating the logic behind the Kala Tika or the black mark which we put, or the evil eye, or the thread, or drishti. Thank you.